craft, okay. To a craft, okay. Sir, white sand. Saurabh, Saurabh, Saurabh is not this. Saurabh is not this. Anshika, mute Sir, yourself. space Anshika, mute is yourself. related to space, sir. Yeah, it is related to space, but it is related to something sound chapter. Sir, the satellite. Sir, is it the sound is related to the satellite? No, I just want to say, see, there is no air in the moon. You know, वहाँ पे कोई air नहीं रहती है. There is no Yes, air in sir. the. Okay. Now, so can the people, if I'm standing next to Ibrahim there on the moon, is it possible that we can communicate to each other? Yes, sir. No, Yes, sir. no, It is possible. No, sir. No, not No, possible. No, not yet, sir. Okay. Not in a normal way. Yeah, no, not possible. So पता है वहाँ पे जब communication करना है, so वहाँ पे पता है एक ही सिग्नल चलते हैं जिसको हम लोग रेडियो वेव्स बोलते हैं. What are they? radio. waves. So they carry So wireless. they carry wireless. एक वायरलेस जैसा अपना एक wireless. ओके वो कैरी करते हैं बिकॉज वायरलेस दिस रेडियो वेव्स ओनली कैन ट्रैवल एंड वैक्यूम में रेडियो वेव्स की सिग्नल्स ही कैच हो सकते हैं जिससे हम लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं. दैट इज द रीजन. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. See, in the space, in the vacuum, in the space, it is all over. It is all, everything is vacuum there. वहाँ पे सिर्फ वैक्यूम है. So जो astronauts, whoever lands on moon or who is walking in the outer space, imagine they talk to each other through wireless set using using the radio wave signals. That's the reason. This is because radio waves can travel even through vacuum. Since sound waves cannot travel through vacuum, but radio waves can travel through vacuum. That's the one of the most important point. I just want to say. Clear? Sir, but why sound waves cannot travel through that vacuum No air. radio? No air, no molecules, no vibration, no signals. Okay, sir. Okay, sir. Okay, so what we studied in the, see, and one of the most important this question. Okay, I just want to answer from Dhruvika or Himanshi. See what is given the picture, how sound travels. So one is gas medium, one is liquid medium, one is fast solid. So कौन से medium में सबसे ज़्यादा sound travel करेगा fastest? In which medium? Runali, Adirath, Atharva? Sir, can I tell? Sir, in solid. Yeah, I think so. Solid medium. solid. Sorry, gaseous medium. No. Solid. Sir, in solid because particles are more combined there and more Yeah. complex. More compact. That is the reason. And little bit compact in liquid, then little bit compact in gas. That's why sound travels faster because the molecules are totally packed in the matter in that case. Okay. See, then this was the case of vocal cords. मैंने बताया था vocal cords में क्या होता है? Anyone? What happens in the vocal cord? Sir, it opens and produces sound. Very good. अच्छा, sound box किसको बोलते हैं बताओ हमारे body में? Which part is called a sound box? Pharynx or larynx? Larynx. Larynx is called as sound box. Now Yes. sound. Okay, it is Sir, situated. Okay, it is situated. Yes, Anshika. Yes, Anshika. And which part is known as a sound box? Larynx. Larynx. Layering. Yeah. Okay, sir. Yeah. Okay. Sound is produced by the vibration of this vocal cords. याद रखना. ये vibrate होता है. I gave you the example that day also because of the vibration of vocal cords. Now I told you one example we did that day. कि muscles are attached. Okay. Whenever the muscles of vocal cords are completely relaxed, due to which the vocal cords are separated and loose, so that the air from the lungs will pass through it without producing any sound. Now मैंने बताया था एक एक्टिविटी हमने किए थे जिसमें हम लोग ने क्या किए थे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स किए थे कि नहीं किए थे उस दिन? Sir, किए थे. तो मैंने जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आवाज कैसे आई थी? जम के आई थी कि धीरे से आई थी? sir, जम के आई थी. जम के. और धीरे से बोला तब मैंने मसल्स क्या थे मेरे? Relaxed. रिलैक्स थे. ओके. सो लंग्स पास, अब सब वाइब्रेशन के लिए तो मुझे एयर चाहिए, तो एयर कौन पास करता है? तो लंग्स पास करते हैं. या हम लोग माउथ से भी लेते हैं तभी भी पास होती है एयर. और ये एयर जाके ये दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में क्या होता है? वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं.
That's the reason they vibrate and that's the reason air is expelled out and that's the reason फिर क्या होता है हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं. Now see muscles are attached. See you can see the muscles are attached to vocal cords. Okay मुझे बताओ जब muscles contract होते हैं. Okay तो जब muscles contract या stretch होते हैं तो मुझे एक बात होता है ना क्या होता है उसमें vocal cord कैसा होता है contract करके देखो एकदम it become tight. It become tight. और जब टाइट होती है तो Yes, फ्रीक्वेंसी sir. कैसी साउंड की फ्रीक्वेंसी कैसी थी हमारी हाई हम लोग की साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई थी ओके मसल्स Hi. को रिलैक्स करो वहां के मसल्स को रिलैक्स करो मसल्स को रिलैक्स सर करो या सर आप कौन से क्लास को पढ़ा रहे हैं? 8th सी सिर्फ 8C को? या बेटा या और सर बी? बी का तो नहीं है क्लास आपको अटेंड करना है तो आप अटेंड कर सकते हैं ओके ओके नाउ सी लेकिन सर आप बी और सी दोनों को पढ़ाते थे ना? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बेटा हाँ तो सर बी और सी दोनों को एक साथ लेते थे ना? हाँ तो आज केमिस्ट्री क्लास नहीं आज फिजिक्स क्लास है अच्छा ओके नाउ सिंस द मसल्स आर अटैच्ड नाउ मसल्स क्या है उसने मसल्स एकदम अटैच एंड इट इज इन द शेप इट इज इन द रिलैक्स इट इज मींस मसल्स अगर अटैच्ड है वोकल कॉर्ड्स को एंड वोकल कॉर्ड बिकम्स एट दैट टाइम लूज एंड थिक okay they become loose and very thick so frequency of sound will be low so an mcq can come or and fill in the blanks can come or match the following can come what happens when muscles become contract what frequency of sound comes what is the condition of vocal cord Hi. okay Hi. yeah if the muscles are relaxed attached to the vocal cord कैसे react करता है and what is the frequency of that sound this can be the questions coming from that topic now एक और Okay. question demonstrate that vacuum that air does not travel through vacuum ये एक एक्टिविटी है एक ग्लास जार है उसमें बेल है ओके एंड उसको बेल को रिंग करेंगे तो उसको साउंड सुनाई आ रहा है सो आई वांट टू आस्क क्वेश्चन टू अधिरथ व्हाई इट इज हैपनिंग कैन यू टेल मी कैन यू एक्सप्लेन मी कैन यू गिव मी द रीजन अधिरथ So can you ask one more time? air is present in the glass jar and the person whoever it is able to hear the sound why Because sir, when a bell is ringing, it is vibrating the molecules, and with the correct help of air, it is yeah traveling to his perfect that boy. perfect आराध्या Mm. आराध्या जस्ट वेट आराध्या Yes, sir. आराध्या इसमें क्यों नहीं सुनाई आ रहा है बेटा साउंड ये बच्चे को why it is happening in Sir, this case second diagram. yeah second diagram Sir, because there is no air inside. so no air means there is vacuum नहीं है तो वहां पे molecules नहीं रहेंगे तो vibration नहीं होगा good I want question from answer from Ashi Singh Ashi Singh Ashi what you are observing in the picture given picture Ashi Himanshi and Mahi Ashi Himanshi and Mahi Sir, can I? no wait Can I? no wait Ashi Mahi what happened Ashi Singh what you are Ashi observing? Singh, What you are observing? Something we yeah Ashi आप आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है आशी ये बताओ पहले Sir, it's electricity. I think. अच्छा ये आप बरसात में आपने कहा the thunderbolt. Sir, lightning. लाइटनिंग या वेरी गुड लाइटनिंग आपको पहले लाइटनिंग सुनाई आती है लाइटनिंग दिखती है कि पहले साउंड सुनाई आता है ये बताओ Sir, lightning, sir. Sir, light travels faster than sound. who travels faster than sound Sir, light. Light. travel faster than sound Sound. that's the reason अच्छा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पता है कितना है स्पीड ऑफ साउंड यू नो No, sir. Sir. स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितना मीटर चलती है वो 340 meter. 340 लेकिन स्पीड ऑफ लाइट पता है कितना है दिस मच
Yes. अब मुझे बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? Sir, light. दैट्स द रीजन, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो वो पहले दिखेगा, एंड जिसकी स्पीड कम होगी वो बाद में सुने आएगा, बाद में दिखेगा. It is due to the very high speed of light that we are able to see the flash of lightning first. And due to the comparative speed, low speed of sound, we are able to see it later on. That is the reason. And हम लोग सुनने वाला, हम सुनते किससे है ये सब साउंड वगैरह? ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जिससे हम लोग सुनते हैं? माही? सर ईयर ड्रम. ईयर ड्रम. Okay, ear is the organ. Mahi Wankhede, are you there? Yes, sir. Okay, Mahi, मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, हम लोग ईयर से ही क्यों सुनते हैं? Why we are able to hear from ear only? Because sir, ear is the only organ that have nerves that send Very message good. to the brain. Brain. Mahi, very good beta. Mahi, very good. Now imagine sound is entering from here. What is present in this part? I just want to answer the from Saransh Banerjee. Saransh, what is present in this part? I told you that day. Saransh, Sanchita, Sanchita. Eardrum. Yeah, eardrum is there. Eardrum is a thin membrane. Okay, it is a means elastic and circular membrane called eardrum, and it is lightly. Okay, now you need to remember this part: hammer, anvil, stirrup. These are the three tiny ear bones present in the vestibular tube, that is called as outer ear, middle ear, and inner ear. Then these signals will be sent to auditory nerve, that is known as cochlea. Remember the diagram. The diagram can be coming in the exam either to draw or either to locate the fun parts of it. It can come the diagram. Yes, beta. Diagram will come in the paper of Yeah, ear. it can come. Okay. Now, इस कोक्लिया के अंदर पता है क्या प्रेजेंट रहता है? लिक्विड. What is present inside the cochlea? Liquids. Liquid. Okay, and this liquid consists of nerve cell. Okay, the sound waves are entering first from ear canal to eardrum, then hammer, anvil, stirrup, and then it is going to liquid. And these liquids are consisting of what? Nerve cells. And these nerve signals are what then sending it to where? Which part? Brain. 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 So that what a sir or teacher has said or my friend has said something, so that I should interpret and I should respond. Now, how does it works? See, the sound waves coming from a body producing sound means that is connected by this outer part that is known as pinna first. Step number one, the part which is collecting the information that is known as outer part, that is known as pinna. This sound waves will pass through the ear canal and fall on the eardrum. The second step is it will go to the eardrum. Is it clear till here? Sir, yes, sir. Clear. Yes, Thin membrane. Yes, sir. Clear. It is a thin membrane that is elastic. Okay. Now, what will happen when the sound waves will fall on the eardrum? The eardrum will start vibrating. It will start vibrating backward and forward. It will do the backward and forth movement rapid. It will do in a rapid speed. And this backward forward movement, okay, backward forward movement will cause the sound waves to move from hammer, then hammer to anvil, and anvil to stirrup. Okay. Then this vibrating stirrup strikes on the membrane of oval window. That is this part. That is known as this oval window. And this will transfer the sound wave signals to cochlea, which is a liquid which is consisting of nerve cells. Okay. Is it clear? Yes, sir. Okay. First, I heard the sound through pinna. Then it went to eardrum. Then it was the vibrations. It was like forward and backward movements, which sent the signal to hammer, then anvil, then stirrup. Then it gave the pass the signal to oval window. Then it passed to the cochlea, which is consisting of liquid, which is having nerve cells and which are sending the signals to brain. My question is the vibration of this liquid in the cochlea. Okay, they are sending signals in the form of what? Electrical impulses or chemical impulses? So they are sending the signals in the form of electrical Electric. impulses. Yeah, remember this. Electrical impulses.
हमारे बॉडी में जितने भी नर्व सिग्नल्स है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इम्पल्स के फॉर्म में जॉइन हमारे हर जगह पर ट्रैवल करते हैं. दिस इलेक्ट्रिकल impulses are carried out by the auditory nerve to the brain, and then brain interprets that electrical signals. ये brain में आने के बाद फिर वहाँ पे interpret होते हैं, and then brain responds what I need to do, कि हम लोग को कैसे रिस्पॉन्स करना है. ओके. अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम लोग को जो शार्पन ऑब्जेक्ट है, पेन पेंसिल वगैरह कान में नहीं डालना चाहिए? अथर्व संगेवार. Sir, okay. हाँ, या व्हाट इज सेड कि पेन पेंसिल शुड नॉट बी पुटेड Sir, इन it can hurt our internal ear organs. सी इट इज व्हाट वेरी सॉफ्ट. द ईयर इज वेरी It सॉफ्ट. is eardrum or a ear canal. Very good, Anshika. It can damage our eardrum, and it is a very delicate organ. So एक बार damage हो गया, so it cannot be means repaired. जल्दी ठीक नहीं होता. That is the reason. Any doubt? सर Yes, बेटा. हम धीरे धीरे जैसे कि कोई कोई लगाते हैं ना कानों में मशीन, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं आता है, तो वो किस वजह से होता है? उनका कॉकलिया में लिक्विड कम रहता है, या उनके वो जो है ना ओवल विंडो, वो ओवल विंडो ठीक से डेवलप नहीं रहता है, या फिर वो लिक्विड वहाँ कम रहता है, या फिर वो सिग्नल्स पास करने वाले जो रहते हैं ना नर्व सिग्नल्स, वो ठीक से काम नहीं करते. ये 3 रीजन हो सकते हैं, इसलिए उन लोग मशीन लगाते हैं. और यही वाला सर सवाल है ना. और सर अगर सपोज हम बूढ़े हो गए और फिर बाद में अभी हम बहुत लाउड वॉइस में सुन रहे हैं, फिर बाद में बूढ़े हो जाने के बाद हमें कम क्यों सुनाई आता है? एज का डिफरेंस हो जाता है बेटा. एज के डिफरेंस में क्या होता है, सी आपको अभी अच्छा दिख रहा है, लेकिन एज होने के बाद क्यों अच्छा नहीं दिखता है? उसका रीजन क्या? देखो, आई गेव यू न्यू मोबाइल. आपको नया मोबाइल दिया आईफोन, आप इन्हें यूज किया आईफोन, और 4 साल बाद क्या होता है फिर आपके आईफोन को? सर उसका काम थोड़ा कम हो जाता है. क्यों हो जाता है बेटा कम? वाई? बिकॉज ऑफ किसी चीजें very high level की आ जाती है. ज्यादा यूज करते हैं. रेगुलर यूज. बिकॉज हम लोग उसको प्रॉपर use Regularly. अगर उसको हम लोग मेंटेन कर पाए ना, बहुत साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं. सिमिलरली हम लोग बॉडी को जो मेंटेन लगता है, हमारे उस ईयर पार्ट या आइस पार्ट को मेंटेन करने के लिए जो फूड लगता है, जो चीज चाहिए, वो हम लोग करते नहीं है. दैट इज द रीजन एक एज होने के बाद वो ठीक से काम नहीं करते. ओके अंशिका, सॉरी मृणाली. sir. हाँ Yes, बेटा. sir. Actually, sir, I have heard that there are some operations कि अगर आपको एक बार चश्मा लग गया फिर बाद में आप वो ऑपरेशन करते हैं, 30 ईयर आपकी एज लिमिट होती है, और तब तक अगर आपने ऑपरेशन कर लिया आंखों का, तो फिर वो रेक्टिया कुछ तो भी रहता है, वो टेढ़ा हो जाता है, वो सीधा हो जाता है, उसके बाद में आपको कभी भी चश्मा नहीं लगता है. रेटिना. तो सर ऐसे, हाँ कुछ तो भी ऐसा ही रहता है. योर जनरेशन मीन्स अपने आपकी जनरेशन में जितने भी लोग हैं उनको सबको चश्मा लगने वाला है. नो वरी, देख लेना. हाँ हाँ, वो तो या लगेगा सर, पर कोई कोई ऑपरेशन गारंटी करती है कि उसके बाद कभी आपको चश्मा नहीं लगेगा, और सर मेरे अंकल ने किया है तो उनको लगा भी नहीं. बात ओके क्या है? ओके. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेंडुलम. वी आर मूविंग टू अ न्यू टॉपिक नाउ, पेंडुलम. ओके. नाउ पेंडुलम में क्या होता है, ये जो बॉब है, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड देन अगेन इट विल गो इन द दिस डायरेक्शन. तो सबसे पहले व्हाट हैपेंस, आई एम मेकिंग इट स्टैंड इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. अगर वो सेंटर पे रुका हुआ है ऐसे यहाँ पे, सो आई विल से इट एज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. Now what will happen? It will move to a distance till here, and then it will move to a distance till here. क्या आप लोगों ने सभी ने पेंडुलम देखा है कि नहीं देखा है? मुझे बताओ पहले. Sir, देखा है. Sure. Yes, sir. Now it swings. It swings in backward and forth movement. Forth and backward. Okay. Back and forth motion. What do you mean by back and forth motion? Can anyone explain to me? Sir, it's called oscillatory motion. Yes, sir. Oscillatory period. Oscillatory period. Anyone? माही, क्या हो गया बेटा? शांत शांत बैठे हो. स्वरा, शौर्य. ओके. इसको बोलते हैं बैकवर्ड मतलब पीछे जाना, फोर्थ मतलब आगे मूवमेंट. ये पेंडुलम का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशंस. जब आगे पीछे होते हैं तो उसको हम लोग ऑस्किलेशंस भी बोलते हैं. ओके. नाउ इस ऑस्किलेशंस में क्या होता है? रिमेंबर समथिंग. नाउ सी, इमेजिन आई एम टेकिंग अ बॉब हियर. ओके, आई जस्ट वांट अ subordinate now. Okay, so I want Aman Shah, sorry, Anshika. Yes, sir. Okay, imagine Imagine it is at equilibrium it is position. at equilibrium position.
Now it is moving to the point A, coming back again, and then it is moving to point B, and then again going to the back position. Okay. Now, what do you observe in the position? There are two extreme positions of the bob. What are the extreme positions? A. Another is B. B. Okay. What is the center position? Sir, O. Very good. Okay. Now, if I'm starting from A point, okay, and bob Yes. is going from A to O to B, B to O, and O to A. Okay. So, जहाँ से उसने start किया वहीं से वापस आया वो. Sir, From the actually your voice is cracking. Can you repeat your question? Akshika, Yeah. unmute yourself, beta. Okay, what I said, जहाँ से बॉब ने स्टार्ट किया वो वहीं से वापस आया. It went from A to O, O to B, B to O, and O to back to A position. So ये जो complete cycle थी, इसको बोलते हैं हम लोग one oscillation or one vibration. We say it as complete one oscillation or one vibration. Is it clear? Sir, Yes. हाँ. sir, I am having a doubt. Sir, why sir? मतलब जो लोगों का थ्रोट के अंदर जो एडम्स एप्पल रहता है सर, वो किसी का सर ज्यादा निकला हुआ रहता है सर, किसी का बहुत दिखता ही नहीं है सर, ऐसा क्यों होता है? इब्राहिम, मैं क्लास के बाद बेटा, अभी हम लोग बहुत पीछे है, आपको आपके एग्जाम से है बेटा उनकी. आई जस्ट कंप्लीटेड. इब्राहिम, मुझे कॉल करो आप कभी भी, मैं आपको आई टेल यू. थोड़ा ओके सर. रिलेवेंट नहीं है अपना क्लास का, इसलिए आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज वी आर ऑलरेडी बिहाइंड इन द सिलेबस. दैट्स व्हाई. अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू. बहुत इजी है उसका आंसर. ठीक है. वो गॉइटर से रिलेटेड है बेटा, याद रखो. थोड़ा गॉइटर से भी रिलेटेड एंड समथिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट वन ग्लैंड इज देयर. आई एम नॉट एबल टू रिक्लेम सम ओके सर. समथिंग ग्लैंड इज देयर. उसका भी डेवलपमेंट की वजह से रिलेटेड है. ओके. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? When a simple pendulum vibrates and its bob go to equal distance on either side of the central position. Okay, ये amplitude का definition क्या होता है? The maximum distance to which the bob of a vibrating pendulum goes from its central position is called as amplitude of the vibration. Now, इसका मतलब क्या हुआ? Okay, now imagine ये जो मेरा bob, ये जो मेरा pendulum है. Okay, now ये जो pendulum यहाँ पे है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओ से लेके ए तक हो रहा है, लेकिन यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक जितना भी हो, ओ से लेके अगर वो ए तक आए या यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, मैक्सिमम डिस्टेंस जितना भी कवर कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, वो जितना भी कवर कर रहा है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं. इट कैन बी आउटर ऑन द लेफ्ट साइड, आउटर इन द राइट साइड. Okay, the maximum displacement of a vibrating object from its central position is called as amplitude of vibration. Any doubt to anyone? No sir. No sir. Okay. सर Hmm. सर आई थिंक सो सर, जब वो बॉब ओ पोजीशन पे रहता है, हाँ. then it go to the A position and it directly goes to B position. तो सर हमको लिखना चाहिए O A and then it goes to B and then comes after its rest position. Yeah, okay, you can write in that also. But I'm telling you the simplest way. Okay. Oh, See, the maximum distance. See, अगर आप बोलोगे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? कि सेंट्रल पोजीशन मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे रुका हुआ है, वो सेंट्रल पोजीशन से मैक्सिमम जितना दूर वो जा सकता है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं बेटा. दैट इज द डेफिनेशन यू नीड टू राइट. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. Amplitude. अगर मुझे एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन मतलब जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ाना है, तो मैं पेंडुलम की हाइट बड़ी करूं या छोटी करूं? देखो, अगर मैं हाइट छोटी करता हूं तो देखो इतना आएगा, लेकिन मैं हाइट बड़ी करता हूं तो उसका क्या देखो ज्यादा आएगा कि कम आएगा? छोटा हो जाएगा, तब आएगा. हाँ, जब मैं कम हाइट आएगा. बढ़ा रहा हूं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी मोर. बट इफ आई डिक्रीज द हाइट ऑफ द पेंडुलम, देन द एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज और इंक्रीज? Decrease. डिक्रीज. एनी डाउट? Yes. No sir. No sir. पक्का बेटा?
Yes, sir. No doubts. Sir, it depends on weight. वेट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन सम ऑफ द फैक्टर्स, कितना वेट है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। लेकिन हमारे इसमें पेंडुलम का एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंडेंट है? एक ज्यादा हाइट। अगर हाइट कम है तो डिक्रीज होगा एम्पलीट्यूड, हाइट ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन। ना वन मोर क्वेश्चन आई एम ओके। मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा, सबका कैमरा तो स्टार्ट करना है। ओके, अभी और 2-3 मिनट बचे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, सी आई एम टेकिंग द बॉब वंस मोर। ओके, मैंने बॉब लिया यहाँ पे एंड बॉब यहाँ तक आया। Okay, that position is A. Imagine it is A. Okay, now the time taken by the pendulum bob to travel from position A to B, from A to B and B. back to A, Yes, sir. जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। A पे बॉब था, he went to O, then B, then O and then A। जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं पे वो खत्म होना चाहिए। ओके, वन कंप्लीट फॉरवर्ड मूवमेंट एंड वन कंप्लीट बैकवर्ड मूवमेंट, जहां से उसने स्टार्ट किया था एंड जहां पे वो एंड कर रहा है, वन फॉरवर्ड एंड वन बैकवर्ड मूवमेंट। जब भी ऐसा मूवमेंट होता है इसको हम लोग कंप्लीट वन ऑस्किलेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन कब होता है? व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, गोज टू ओ, बी, दिस इज फॉरवर्ड, कमिंग बैक बी टू ओ, गो टू ए, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म किया। इसे कहते हैं हम लोग वन वाइब्रेशन। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इट इज कॉल्ड एज Time period. time period. Any doubt till here? No, sir. No, sir. No, sir. No doubts. Now, one more topic that is last, that is frequency. That is frequency. Now see, one vibration means क्या होता है? One vibrations mean कि जो भी मेरा पेंडुलम है, पेंडुलम है देखो, Oscillation. हाँ, जो ऑस्किलेशन है उसका वो जाके वापस एक जगह पे, एक, दो, तीन, चार, पांच। एनी डाउट टिल हियर? No, sir. No. So I told you the amplitude. Amplitude means maximum displacement. Time period मतलब time taken to complete one vibration. And one is frequency. Frequency. What do you mean by frequency? Frequency means the number of oscillations or number of vibration per second. Number of vibrations per second is called as frequency. Yes, Okay. sir. Yes. See, I told you Okay. about amplitude. Amplitude is maximum displacement. Maximum displacement कितना हो रहा है? Then I told you time period. Time period मतलब एक vibration के लिए कितना लग रहा है? एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स कि एक सेकेंड में बोलूंगा 100 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एक सेकेंड में 40 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर? एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स। रिमेंबर, दैट इज हर्ट्स, दैट इज साइकिल्स पर सेकेंड, रेपिटेशंस पर सेकेंड यू कैन से। ओके, एनी डाउट? Okay, sir. No, और sir. चीज, No, sir. और No चीज doubts. कि जो भी लो फ्रीक्वेंसी है, एनी लो फ्रीक्वेंसी लाइक मींस पेंडुलम की जो लो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो हमारे हमारे ईयर्स हमें सुनाई नहीं देती है, because sound less than 20 hertz cannot be audible to us. That's the reason we're studying in the next class. Please turn on your camera. I need to mark your attendance, please. Do it fast. I'm having another class. Aman Shah, Ibrahim, Adirat, Anshika, Hardik, Azra, Aradhya, Ashi, Mrunali, Shaurya, Dhruvika, Shaurya, Shahu, Azra, Aradhya, Aman Shah, Mrunali. माही बेटा कैमरा ऐसा क्यों रहता है तेरा हर समय? नींद आ रही थी क्या बहुत सारे लोगों को आज? शौर्य, स्टार्ट योर कैमरा प्लीज। आई नीड टू मार्क योर अटेंडेंस। सारांश, okay, thank you, bye bye. Bye, sir.